Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Naval Kishore Singh, Assistant Professor, Vishwabharati Santiniketan. On behalf of MMTTC, Faculty of Performing Arts and Faculty of Education, Department of Education, I take this opportunity to... Am I audible? Am I audible? My voice is there? Yes, sir. I take this opportunity to welcome the next speaker of the day, Mr. Sunil Darji. So let me read his profile. Mr. Sunil Darji is a distinguished printmaker and academician, currently serving as an assistant professor in the Department of Graphic Arts, Faculty of Fine Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda, where he has been teaching since 2001, holding a permanent position from 2003. He earned his BA in painting and MA in graphic arts, both with first class from the Faculty of Fine Arts, MS University of Baroda, and qualified the UGC NET for lecturership in 1998. His teaching and research career spans over 2 decades, alongside an active practice as an exhibiting artist. Mr. Darji has held solo exhibition at Nazar Art Gallery Baroda in 1999 and Jahangir Art Gallery Mumbai in 2009. His works have been showcased in prestigious national and international exhibitions, including the GMAC Printmaking Triennial, France 2007 and 2021. 59th National Exhibition of Art, New Delhi in 2018, and exhibition in South Korea, Bhutan, Pakistan, and New Zealand. He has also participated in numerous workshops, residencies, and printmaking camps, including the Hive Art Residency in Gwangju, South Korea in 2013. A recipient of several accolades, he has been honored with the National Scholarship 1995 Ministry of Culture, Government of India, AIFACS Gujarat Award in 2002, and multiple State Academy Awards for graphics from 93 to 97. His works are part of collaboration in India and abroad, including the Lalit Kala Academy, New Delhi, Taiwan Museum of Fine Arts, Tama Art University Museum, Japan, and various private and public collaboration worldwide. Sir, I welcome you to this platform to deliver your lecture. Thank you. Thank you very much for introduction. I welcome you all the participants for this my session, and I am really very thankful to the Faculty of Performing Arts, the MS University Baroda, for inviting me and to deliver a presentation and lecture on my subject. My topic is the impressions through the time, indigenous knowledge, and the rise of print in India. So I am basically from the field of printmaking, that is called as graphic arts, and I understand that I don't know how many participants are there from fine arts, but there must be because from Baroda there are few participants as well as maybe from other universities also are there. But it might be a little difficult to understand, or but keeping in mind that this would be little easier to understand for everybody, I have kept mostly the images in my presentations and my talk. So you can see on this first slide that there are 2 images. One is of an old press, which is a wooden press. I think uh, the word print is not understandable. It is quite easy word, and everybody is known about the word that we use, print word.
every now and then in our day-to-day works, right? So what I am going to talk about the print in the sense of an artistic development as a printmaking medium. So here you can see the another image, which is a copper plate, which is the engraving image, metal engraving image. So how basically these printing images or printing trade developed throughout the time, over time, right? So yeah, next slide. You can see one image here that is very well known, and I think with this image everybody must be very much aware about it. It's a very famous woodcut of Hokusai, that is a Japanese printmaker of 19th century. It is called as the Great Wave of Kanagawa. So I will show you some of the images which you may like, and you can okay. ओके सो આપણે इसमें जो मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा वो काफी सारी ऐसी इमेजेस है, मे बी आप शायद जानते भी होंगे। जैसे यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ही पॉपुलर इमेज है, और ये एक जापानीज प्रिंट मेकर होकुसाई है। होकुसाई के बारे में उन्होंने जो किया हुआ है, और ये वुडकट प्रिंट है। जो जनरली क्या है कि प्रिंट मेकिंग जो नॉर्मली कंटेम्प्ररी प्रिंट मेकिंग है उसमें चार ज्यादातर मीडियम्स जाने जाते हैं। सो उन चार मीडियम्स के बारे में हम बात करेंगे आज, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी सबसे पुरानी प्रिंट मेकिंग मीडियम थी, और उसके बाद कैसे कैसे वो डेवलप हुई। सो बेसिकली प्रिंट मेकिंग क्या है कि ये जनरली मास रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए होती है, और इसमें एक मास्टर इमेज होती है, और या तो उसे ब्लॉक कहे या मैट्रिक्स कहे, एंड देन इट कुड बी multiplicated or it could be duplicated. That is the idea behind any of the printmaking medium. Next. So here you can see the old engraving or drawings of printing, how they were doing. Like ये generally काफी पुराने engraving या जो आर्टिस्ट जो प्रेस यूज करते थे, तो जनरली ये वुडन प्रेस, जो आज के जमाने में ये नहीं होते हैं, ये जनरली आज मेटल के प्रेस होते हैं, और हर टेक्निक के लिए डिफरेंट प्रेस होते हैं। जो चार मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक रिलीफ प्रिंट मेकिंग, दूसरा है प्लेनोग्राफी, तीसरा है इंटाग्लियो, और एक है स्टेंसिल प्रिंटिंग। सो हर एक की एक नई अलग प्रेस होती है, और हर एक में टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, एंड it is used by the artists accordingly their own use. Next. Yeah, so तो print क्या है, what is a print, what is a, and like हम ग्राफिक आर्ट्स शब्द का यूज करते हैं, तो ग्राफिक आर्ट्स क्या है और प्रिंट क्या है, प्रिंट मेकिंग क्या है। सो ये जो जो ग्राफिक आर्ट्स, ग्राफिक वर्ड है वो बहुत मायने में यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर के माध्यम में भी यूज होता है, जिसे ग्राफिक डिजाइन बोलते हैं, और मैनुअल ग्राफिक्स जो फाइन आर्ट्स में यूज होती है, विजुअल आर्ट्स में यूज होती है, इट इज नोन एज ग्राफिक आर्ट्स, where the artists use mostly the manual processes like relief print, lithography, or intaglio and all. Right? So the graphic term came from the Greek terminology. It is called as graphene, meaning to draw or to make a mark or to write. So from that it came into the graphics, the term as graphics. So generally a print is an impression
from a matrix. So matrix could be either from any of the material, like it could be from metal or stone or silk cloth or any of the surface which has been taking an impression, right? So the image could be made onto this surface, and it could be then transferred through the image through the using ink on any of the surface like paper, cloth, leather, or any other things. So what is print making does actually, and how it is important in our society as well as in the history. So you all know that in today's day we all uh, use lot of prints. Sometimes we don't know what is the medium of it, but it is very common that and the important thing is that it reflects knowledge. हमारा जो knowledge है और information और image को represent करता है. It is a kind of vehicle to transform these elements into the mass. So ज्यादातर लोगों तक हमें पहुंचना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये प्रिंट मेकिंग माध्यम जो है वो उसमें यूजफुल है. इट इज लाइक पेंटिंग है या फिर ड्राइंग है या स्कल्पचर है, जो ये मूर्तिकला है, ये सारी ऐसी विधाएं हैं जो इसमें वो एक से ज्यादा करना मुश्किल है. अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो दे कांट रीच आउट टू एवरीवन. एंड देन इन दैट वे print making is it has much more flexibility and availability of taking multiplication of one image and could be reached to many people. And most impressions from this matrix reflects the mirror image. मतलब कि जो आपकी मैट्रिक्स होगी, जो आपका माध्यम जिसमें आप यूज कर रहे हैं, उसका जो इमेज होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, दैट विल बी मिरर इमेज ऑलवेज. It means an image or text created in on the matrix will appear reverse or inverted image. Next. So if we go further in the history, how it could have been came into the existence, like so प्री हिस्टोरिक टाइम में हम देखेंगे तो जो आर्टिस्ट या जो जो आर्टिस्टिक वर्क्स हमें मिलते हैं, जो केवमेंस ने जो बनाए, गुफाओं में जो चित्र दिखते थे, उसमें आपको हैंड प्रिंट्स, जो पाम प्रिंट्स आपको दिख जाएंगे. तो दैट आर द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ prints which are made, and then through the time, like 6th century BC, there are examples could be found in this Babylon and all, Mesopotamia and all, that are called as cylinder prints. The Cyrus cylinder which was used, and cylinders of Nemonides. These are the earliest examples of impressions taken on, not on the paper, but it is taken on the clay tablets और मिट्टी के जो टैबलेट्स बनाए जाते थे उसमें उसकी इम्प्रेशंस ली गई है. नेक्स्ट. तो इस तरह के जो सिलेंडर्स बनाए जाते थे, इसमें जो टेक्स्ट होती थी उस समय की, या उसी जो भी कंट्री थी, बेबीलोन या अकेडियन क्यूनिफॉर्म्स, the script was carved onto it, and it could be taken the impression onto these clay tablets that you can see onto the screen. Also they were making some sort of images, and it could be reproduced, so they can take in multiples. That these are the earliest examples of print, not on the paper, because paper invention came so later. Yeah, next. Yeah, this is also one of the impression taken 3000 or more than that BC, and this example is from Mesopotamia,
where they were using the round cylinder seal for rolling and and to impress it onto the clay tablet. So in other early societies also, it could be found like in China and Egypt. So small stamps are also used to print on cloths at that time. Yeah, next. Yeah, if we see how paper was invented, that was much later, like in second century AD, 105 AD. So that was by a Chinese official named Cai Lun or Kai Lun. He was credited to invent the paper. Here you can see how he is using, like how the paper was made. It is almost the same method which is done today also. So that was the invention was started in China. Yeah, next. Also, China is the first to do the printing on the wood block, the making image onto wood block and then take the print. So that is around 6th and 7th century. And here you can see an image that is a Korean book. That is the earliest printed Korean book of movable metal type printing. That is 1377. If you all know about John Gutenberg of Germany, who is known to be one of the earliest to make the printing press. So before that, Asia is Asian country of South Korea that is known to reproduce this sort of movable metal type press and printing, that is called as Jikji, Zikzji. It is published in 1377 and it is in a museum in France. So this is the oldest movable metal type printed book, which is basically they were used. They used it as the Buddhist scriptures to print and all. It is actually made use it in a temple in South Korea. Yeah, next. Yeah, so here if we see the four basic printmaking methods, so here you can see relief printmaking, and the tools you can see are different tools or gauges where the artist use these tools. आर्टिस्ट अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, इसमें हर एक की टिप्स अलग होती है। किसी टूल को वी टूल कहा जाता है, किसी को यू टूल कहा जाता है, कोई फ्लैट नाइफ होती है, किसी में एंगुलर नाइफ्स होती है। तो ये सारी नाइफ्स जो है, जो वुड कट टूल्स है, उससे ये एक इंसर्ट तस्वीर में आप देख रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। जो व्हाइट एरियाज है वो इस टूल से काटे जाते हैं और जो ब्लैक है, जो ब्लैक पोर्शंस है, वो सारे रिलीफ पोर्शंस है। सो वो उसके ऊपर इंक लगेगी, ब्लैक इंक, जो रबर रोलर से लगाई जाती है, एंड देन इट इज गेटिंग प्रिंटेड बाय प्लेसिंग अ पेपर ऑन टू द ब्लॉक, और बैक साइड से पेपर के ऊपर आपको रबिंग करना है। सो दैट इज हाउ actually this printing is done. So that was started around in 7th century in China. So actually they have also started this printing to reproduce the scripts written in Buddhist you know text. या दिस इज द इसमें आप जो देख रहे हैं एक वुड एनग्रेविंग टूल्स है, और दूसरा जो नीचे के इसमें तीन टूल्स दिखाई दे रहे हैं, वो वुड कट इमेजेस के हैं। सो ये दोनों मेथड्स अलग है, वुड कट अलग है, वुड एनग्रेविंग अलग है, इसमें टूल्स अलग होते हैं, वुड भी अलग यूज होता है। सो आर्टिस्ट अपने हिसाब से, अपने इमेज के हिसाब से दे यूज इट। I think मैं in between I want to show a video. Please, you can see it. So I think it will be much easier to understand, and then I will continue the slides. Please, एक video है.
lot of different ways to do prayers. They pretty much have common with an ink or paint on the surface, that surface on a paint, or whatever you want. There are four main types of print of the latest printmaking that you can or take something which you can carve, like an olive or carve away on the sledge. Don't want to show up this picture. Then you put ink over the labels. You press the paper on the surface and allow to review on the print. Whatever you design in reverse, here similarly focus on the हेलो सुनील सर, ऑडियो नहीं आ रहा है शायद। मैं बता monoprinting. Monoprints is where you make a print that can only happen once. The printing process is a one-time deal. So you end up with one piece of art each print. A way to do this would be using a jelly plate or a gel plate, and you put the paint or the ink onto the plate and then press the paper on and pull it off. The act of pressing the paper and pulling the ink off means that that one print is all you can get
of that exact picture. But you can reapply ink and paint to the plate and keep going. The jelly plate would be what it sounds like, a plate made of really firm, like Jell-O substance, but not the kind you eat, where the surface is soft enough that you can press and design onto it, and it will allow the paper to be pushed into it. So this was a large overview of printmaking as a whole. There are a lot more printmakers and a lot more to learn about each of these techniques. Have fun, guys. Bye. सॉरी सम आई थिंक ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम था, बट आई थिंक अभी सुनाई दिया। एक और वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कौन सा प्रिंट मीडियम का कब इन्वेंशन हुआ वगैरह। एक छोटा सा वीडियो है, 2-2.5 मिनट का। प्लीज वी विल जस्ट लुक इनटू इट। ओके, सो ये जो 2 वीडियोस दिखाए, इसका पर्पस एक था कि आपको इसमें पता चले जो जो नॉन फाइन आर्ट्स से सब्जेक्ट से है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो था, पहला वीडियो था, उसमें 4 जो प्रिंट मीडियम है जिसको आर्टिस्ट अभी यूज करते हैं मोस्टली टू प्रोड्यूस देयर ओन क्रिएटिव एक्सप्लोरेशंस, लाइक अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को संयोजने के लिए उस माध्यम का यूज करते हैं, जो है रिलीफ प्रिंट मेकिंग। इसको वुड या लिनोलियम कट के माध्यम से यूज करते हैं। लिथोग्राफी जो है, इट इज कॉल्ड एज प्लेनोग्राफी प्रोसेस। सो प्लेनोग्राफी इट मीन्स जो भी आपका वाइट और ब्लैक पोर्शन है या कोई भी कलर आप यूज करते हैं, उसको प्लेन सरफेस से उसकी प्रिंट ली जाती है। रिलीफ मीन्स जो सरफेस ऊपर है,
जो रेज्ड है वो प्रिंट होगी. सो दैट इज द रिलीफ प्रिंट. इंटेग्लियो प्रोसेस जो है वो वुडकट से या रिलीफ प्रिंट से बिल्कुल उल्टा है, जिसमें कार्व की गई लाइंस या एच की गई लाइंस को प्रिंट में ली जाती है, और जो सरफेस है उसको क्लीन वाइप ऑफ किया जाता है. और चौथा जो प्रिंटिंग माध्यम है वो सेरीग्राफी है या स्क्रीन प्रिंटिंग है, जो कि एक स्टेंसिल प्रिंटिंग है, मेथड है. और उसे एक स्क्रीन जो नाइलॉन क्लॉथ को वुडन फ्रेम में स्ट्रेच करने के बाद जो भी इमेज आप बनाना चाहते हैं उसे आप एक पीवीसी ग्लू से कवर अप करते हैं. जो क्लोज्ड एरिया है उसमें से प्रिंट इंक ट्रांसफर नहीं होगी, और जो ओपन एरियाज है वो प्रिंट उसकी होगी. इस तरह से जो इमेजेस क्रिएट की जाती है. और लास्ट में उन्होंने जो बताया वो मोनो प्रिंटिंग है. उसमें आप अ, ज्यादातर मल्टीपल्स नहीं ले सकते हैं. वो मोनो मीन्स अकेला एक प्रिंट. और जो ये इस 4 प्रिंट मेकिंग मेथड्स बताए, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग multiples. Okay, so one can take as many impressions as they want from one block. Next. और जो दूसरा जो वीडियो हमने देखा उसमें जनरली जो भी जो प्रिंटिंग मेथड्स एग्जिस्ट हुई हिस्ट्री में, एक के बाद एक, जैसे वो चाइना वुडकट के बाद वुड रिलीफ प्रिंट मेकिंग के बाद कैसे कैसे प्रिंट के प्रेस इन्वेंट हुए, और उसमें से अलग अलग तरीके से प्रिंट ली गई. और आज के जमाने में जो हम फास्टेस्ट जो कहते हैं डिजिटल प्रिंटिंग या जेरोक्स प्रिंटिंग, इनका कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ अपनी सोसाइटी में, ये दिखाया गया था. ओके, सो दिस इज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एक जो डायमंड सूत्रा करके एक ओल्डेस्ट एक बुक है, दैट इज प्रिंटेड इन चाइना in Tang Dynasty. This is the world's earliest dated printed book. So चाइना में भी जो टेक्स्ट प्रिंट होती थी वो पहले मूवेबल मेटल टाइप्स के पहले वो लोग वहां पे उन्होंने इन्वेंट किया था सिरामिक के टाइप्स बना के. सिरामिक में से टाइप कास्ट करते थे, बेक करते थे, एंड देन दे वर यूजिंग इट फॉर मेकिंग द इम्प्रेशन. नेक्स्ट. Okay, this is an example of woodcut print by one of the famous great artists, Albert Dürer. This is his rhinoceros print. और ये उन्होंने 1515 में बनाया था. ये ऑलमोस्ट से मोर देन 500 साल पुरानी प्रिंट है, और ये बहुत फेमस प्रिंट मानी जाती है. सो इस प्रिंट का भी एक बहुत अच्छा कहानी है और इंडिया से जुड़ा हुआ है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी. तो ये जो राइनोसोरस है ये इंडिया का प्राणी है, इंडिया का क्रीचर है. और somehow it reached to पोर्टुगल. सो यहाँ सेंट्रल गुजरात के एक राजा थे जो पोर्चुगीज कॉलोनी थी यहाँ पर. उन्होंने एक राइनो यहाँ से पोर्टुगल में लिस्बन में भेजा, और पोर्टुगल में उसके एक आर्टिस्ट ने इसकी एक प्रतिकृति बनाई, जिसके जस्ट डिस्क्रिप्शन से अल्बर्ट ड्यूरर ने ये राइनो बनाया था, विच इज नॉट एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल रियल राइनो. सो इसकी कहानी बहुत अलग थी. जब उन्होंने अल्बर्ट ड्यूरर एक महान कलाकार थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स बनाए जो कि एग्जिस्टिंग थे, लेकिन वो रियल इसमें अलग दिखते थे, और जो उन्होंने बनाया डिस्क्रिप्शन से बनाया या सुन के बनाया या पढ़ के बनाया वो कुछ और था. जैसे वो लायन भी उनका एक चित्र है, वो कुछ अलग था, लेकिन जब उन्होंने रियल लायन को देखा तो वो डिफरेंट हुआ. तो ये जो राइनोसोरस उन्होंने बनाया था 1515 में, इट इज a very historic print, and he has sold almost say 4 to 5,000 during his lifetime.
So it is kind of bread and butter for him throughout his life career. ऑल्सो ये जो राइनोसोरस का प्रिंट है जर्मनी में आज तक लास्ट कुछ सालों तक अभी तक ये वहाँ की साइंस बुक में पढ़ाया जाता था। तो ये 500 साल पुरानी इमेज का इतना पावर हम देख सकते हैं, विच इज बाय अल्बर्ट ड्यूरर। नेक्स्ट अगेन अल्बर्ट ड्यूरर ने एक ये प्रिंट बनाई है, इट इज कॉल्ड एज द फोर हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स। ये भी एक उनकी वुडकट प्रिंट है। ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स इमेजेस है इसमें, बहुत काफी इमेजेस इसमें दिख रही है और बहुत कॉम्पैक्ट इमेज है। तो ये जो इमेज है वो बुक ऑफ रेवलेशन जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में है उससे प्रेरित है। और जो एपोकलिप्सी उनकी जो प्रिंट सीरीज है दैट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। And here you can see four horsemen riding on a horse that represents the death, famine, war and plague. So ये उसका चित्रण है। और देखिए अल्बर्ट ड्यूरर ये 500 साल पहले भी इतना मतलब अपने आप से he was very much aware about his self। तो उन्होंने अपना एक मोनोग्राम यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इमेज के AD करके। वो जो भी बनाते थे, जो भी ड्राइंग होता था, प्रिंट होती थी या पेंटिंग होता था, ये मोनोग्राम हमेशा उन्होंने ड्रॉ किया है या प्रिंट किया है। सो ही वाज दैट अवेयर अबाउट हिज फ्यूचर थिंग। नेक्स्ट yes, these are some of more examples of relief print. The left side में you can see a lino cut printing by Pablo Picasso, one of the famous 20th century painter, printmaker and sculptor. So उन्होंने not being a printmaker उन्होंने ये माध्यम को भी चूज किया और इस मीडियम में काफी सारे काम किया है। पिकासो इन हिज लाइफ टाइम डन ऑलमोस्ट मोर देन 2000 प्रिंट्स। एंड राइट हैंड साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक आर्टिस्ट थे थॉमस बेविक। ही इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द वुड एनग्रेविंग टेक्निक। सो वुड कट और वुड एनग्रेविंग बोथ आर डिफरेंट टेक्निक्स। सो एनग्रेविंग जो मेथड है वो एक्चुअली गोल्डस्मिथ मेथड है। जो गोल्डस्मिथ अपने सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उसमें जो ग्रेवर यूज करते हैं, जो ब्यूरिन एक टूल होता है वो ब्यूरिन्स का यूज करते हैं। उसी टूल से वुड में भी कार होता है, बट जो वुडकट के लिए होता है यूज वो इसमें नहीं होता है। और वुड एनग्रेविंग का जो ब्लॉक होता है वो एक्चुअली स्लाइसिस होती है। जो ट्रंक को वुड के ट्रंक को स्लाइसिस ब्रेड की तरह काटी जाती है। और जो वुडकट के जो लिए जो प्रिंट के लिए जो यूज होता है वो ब्लॉक वो जनरली सीधे प्लैंक्स में कट किया जाता है जो अलोंग द ग्रेन होता है। ये जो एनग्रेविंग है उसका वुड जो है एंड ग्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट yes, some more examples of later centuries, like in 19th century Japanese woodcuts were very famous। so उसमें एक 200-250 साल के अंदर एक प्रिंट माध्यम वुडकट माध्यम में ही यूकियोई आर्टिस्ट फेमस थे। यूकियोई मतलब floating world images। So these are the image created by one of the famous artist Endo Hiroshige। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है और राइट हैंड साइड दोनों इमेज एक्चुअली फ्रेंच और यूरोपियन आर्टिस्ट ने भी इनकी कॉपीज की है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे विंसेंट वान गोग वेरी फेमस आर्टिस्ट थे, डच आर्टिस्ट। सो उन्होंने भी इस वुडकट्स को अपने ऑयल पेंटिंग्स में चित्रित किया है। सो दिस इज a scene of sudden rain at Ohasi River Bridge. Yeah, next.
Okay, now we will move on to the invention of the printing press, movable metal type press in Europe. So that is known by the Johannes Gutenberg, who was one of the inventor known for this press. So उन्होंने 1450 के टाइम में ये प्रेस को इन्वेंट किया. नेक्स्ट, जनरली मूवेबल मेटल टाइप प्रेस चाइना और कोरिया में पहले ही कार्य हो चुका था, बट 1930 से ही वाज वर्किंग 1430 से ही वाज वर्किंग to improve this technique, and around in 1450s he has created that. Yeah, next. या जो मूवेबल मेटल्स की हम बात करते हैं वो इस तरह से मेटल का एलॉय को पिघला के देन उसको कास्ट किया जाता था. जो भी अल्फाबेट्स कास्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स कास्ट करते थे, और जो जब आप प्रिंट लेंगे तो वो फ्रंटल तरीके से प्रिंट होगा. सो जो एक कंपोजर होता है वो समटाइम्स दे कैन असेंबल 2000 कैरेक्टर्स और लेटर्स 1 घंटे के अंदर. और ये जो मैट्रिक्स है, जो अलॉय जो यूज होती थी वो लीड, टीन और एंटीमोनी से बनाया जाता था, कास्ट किया जाता था, और उसको वुडन फ्रेम के अंदर असेंबल किया जाता था. नेक्स्ट. Yeah, you can see here the image of the tiny this matrix or the casted alphabets in different boxes. So इस तरह से वो पूरा असेंबल किया जाता था और प्रिंट ली जाती थी उसकी. तो पहले के जमाने में इसको ट्रेडल प्रेस भी जाना जाता है. हमारे देश में बहुत से लोग ट्रेडल प्रेस कहते हैं, या तो लेटर प्रेस भी इसे कहा जाता है. So letterpress is the same technique which is used before the invention of offset printing. Next. Okay, so 1436 he begins to work in this printing press. It took 4 years to finish making this movable metal types. So generally Gutenberg को माना जाता है इंग्लिश या जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में मेटल को कास्ट करने के लिए, और ये जो प्रेस उन्होंने वुडन बनाया उसके लिए. सो उनके प्रेस में से जो पहली जो किताब निकली वो 42 लाइन बाइबल थी, और पहले उसे 40 लाइन्स प्रिंट होती थी, एंड देन ही हैज कंपोज्ड इनटू 42 लाइन वर्जन. या नेक्स्ट. Yes, here you can see an example of Gutenberg seeing the image of printed image, and at the back you can see the press, which is a different kind of press. This is an illustration actually. So किस तरह का स्टूडियो होता था इसका just an atmosphere you can see. Next. And this is that Bible printed in this sort. Next. This is the same letterpress, a worker arranging the alphabets to create the page on a wooden block assembled into the frame, and that could be then transferred onto the paper. Next. अभी जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है इंटाग्लियो प्रिंट मेकिंग. सो 4 प्रोसेस जो है उसमें से इंटाग्लियो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज के जमाने में जो भी प्रिंट मेकर्स है मोस्टली दे प्रिफर टू वर्क इन दिस मेथड और processes. Under intaglio process there are so many different processes like aquatint and mezzotint and engraving and sugar lift, और भी बहुत कई सारे प्रोसेस है जो इस माध्यम में यूज की जाते हैं. और यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिखाई दे जा रहे हैं.
जो कि एक लेदर बैग आपको दिख रही है राउंड शेप में, उसके ऊपर जो है वो मेटल एनग्रेवर है, इट इज नोन एज ब्यूरिन, द goldsmith's tool. And center में you can see different tools which is used for making the image as well as to scrap the burnish and to create a line drawing onto the plate. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको रेड ब्लू और येलो कलर में एक 3 प्लेट्स दिख रही है, वो सारी प्लेट्स मेटल प्लेट्स है। और इंटेग्लो के लिए जो जनरली प्लेट्स यूज की जाती है वो जिंक प्लेट होती है, एल्यूमिनियम प्लेट होती है, and also copper plate or steel plates also could be used. So this is accordingly the artist preference, like किसी को जिंक में यूज करना है या कोई कॉपर यूज करता है, कॉस्टली भी होती है कॉपर, तो sometimes people use zinc plate or aluminum plate also. और ऊपर में जो एक इमेज है that is of a tool called as rocker tool और स्क्रैपर और बर्निशर, ये एक मीडियम है, मेजोटिंट नाम का मीडियम है, जो कि बहुत रेयर मीडियम है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। इसका उत्पादन भी इंडिया में बहुत नहीं होता है, और अभी अभी कुछ लोग बनाते हैं, बाकी ये यूरोप वगैरह में, अमेरिका वगैरह में इसके प्रोडक्शन होती है। जो भी लोग यहाँ इंडिया में भी करते हैं वो वहां से मंगवा के यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो दिस इज एज आई सेड, ये गोल्डस्मिथ का जो मीडियम है, एक्चुअली इंटेग्लियो का जो इन्वेंशन भी हुआ है, इट इज नॉट नोन बाय द रियल पर्सन हु हैज इन्वेंटेड इट। सो इट माइट बी फ्रॉम केम फ्रॉम द गोल्डस्मिथ ट्रेड। तो गोल्डस्मिथ जो भी इमेज कार्व करते हैं अपने सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स के लिए, और मे बी समटाइम्स दे कुड हैव थिंक ऑफ टेकिंग एन इम्प्रेशन के ये कट किया है उसे कैसे दिख रहा है। तो दैट इज हाउ इट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड उसमें आप नीचे का जो इमेज है वो कॉपर प्लेट इमेज है, जो कि टूल से कार्व किया गया है, और ऊपर में भी आप देख सकते हैं हाउ इट इज used, so the metal flakes could come out when it is used. Yes, next. ओके, तो इसमें एक जो मुख्य ये टेक्निक है, इट इज कॉल्ड एज एचिंग in intaglio. Etching is done using any of this plate, either zinc plate or copper plate. बट एच जो शब्द है वो एसिड यूज करने के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि ये जो इमेज बनाई जाती है उसे हमें एक एसिड रेजिस्टेंट ग्राउंड लगाने के बाद उस पे शार्प नीडल से ड्रॉ किया जाता है इमेज को, और जो एक्सपोज हो गई लाइंस जिससे हमने जो ड्रॉ किया उस इमेज को एच करना होता है नाइट्रिक एसिड में। एसिड की ट्रे होती है, एसिड एंड वाटर कंबाइंड, और ये इमेज तब उसमें एच हो जाती है और डीपली इनग्रेव हो जाती है या एच हो जाती है। उसके बाद जब आपको प्रिंट लेनी होती है तो वन हैज टू पुट द इंक इनटू द लाइंस, एंड द सरफेस जो वाइट दिख रहा है वो आपको क्लीन करना होता है। तो इस तरह से ये मीडियम यूज होता है। ये आपको सामने जो इमेज दिख रही है वो एक रेम्ब्रांट की है, 1606 में बनाई हुई। ही इज द पर्सन बॉर्न, द आर्टिस्ट बॉर्न इन 1606, ही वाज अ डच आर्टिस्ट। एंड राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पाब्लो पिकासो, द स्पेनियर्ड ग्रेट आर्टिस्ट हु बॉर्न इन 1881, उनकी ये एक प्रिंट है। सो बोथ आर मेड इन इंटेग्लियो एचिंग मीडियम। नेक्स्ट, ये एक प्रिंट है एचिंग में, ऑटो डिक्स करके एक जर्मन आर्टिस्ट थे। सो ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन वॉर रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ही वाज along with becoming an artist,
ही वॉज ए सोल्जर फॉर द जर्मन आर्मी, और उन्होंने ये प्रिंट्स की है। तो आर्मी में रहते हुए, वॉर के साथ रहते हुए, वॉर की क्या पोजीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है, कैसे लोगों का कत्ल किया जाता है, और मतलब किस तरह से ट्रेजेडी जो उन्होंने देखी, वो सारी चीजें उन्होंने अपने प्रिंट माध्यम से चित्रित की है। दिस इज वन ऑफ दिस प्रिंट। उन्होंने काफी इस माध्यम में, इस सीरीज में काम किया हुआ है। नेक्स्ट। हाँ, ये भी उसी वॉर सीरीज का एक प्रिंट है, ऑटोडिक्स। ये भी एचिंग है। नेक्स्ट। ये अभी मैंने जो आपको बताया, मेजोटिंट करके एक मेथड है, जिसमें रॉकर करके एक टूल यूज होता है। सो ये डार्क टू लाइट मेथड कही जाती है। इसमें एक्चुअली वो रॉकर टूल से उसमें टाइनी टीथ्स होते हैं, और उसे प्लेट को रॉक किया जाता है, मतलब कि वो टीथ से डेंट्स किए जाते हैं, इतने डेंट्स किए जाते हैं कि इसकी प्रिंट अगर ली जाए तो वो ब्लैक प्रिंट आएगी। तो उसमें से जो भी इमेज हमें निकालनी है, बाहर निकालनी है, वो सारी स्क्रैप और बर्निश करके उसे लाइट करनी होती है। सो जो लाइट पोर्शन आपको दिखेगा, एकदम वाइट दिखेगा, वो उसे पूरा बर्निश कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ tonal gradation could be created by the artist. So this is the method is called as mezzotint. Next. या ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, एमसी एशर। सो उनकी ये प्रिंट है, शायद किसी ने अपने आप में से देखा होगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो तरीका है काम करने का, ये डे एंड लाइट उन्होंने दिखाया है आपको। इमेज ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी दोनों साइड से, बट एक साइड में लाइट है, एक साइड में डार्क है। तो एक साइड में वो लाइट मतलब कि दिन दिखा रहे, एक साइड में रात दिखा रहे। सो ये इसका जो टाइटल है वो मेटामॉर्फिसिस है, एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज। एक इमेज में से दूसरा इमेज कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसे उनकी भाषा में टेशलेशन कहा जाता है। सो टाइल को समझ लो, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायर टाइल्स में से ऊपर जाके वो बर्ड बन जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज टेशलेशन और मेटामॉर्फोसिस इन हिज प्रिंट्स। सो मोस्ट ऑफ हिज प्रिंट्स जो उन्होंने बनाई है, वो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स के नाम से बनाए हैं। सो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, वो कभी शायद रियल लाइफ में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, ऐसा उन्होंने इसकी संरचना की है। और जो भी उनका इंटरेस्ट था, वो बहुत ही, उनका अप्रोच जो है वो मैथमेटिकल अप्रोच रहा है उनके प्रिंट्स में, उनके पेंटिंग्स वगैरह में। सो और फिजिक्स से भी, एक रोजर पेनरोज करके एक साइंटिस्ट थे, वो रोजर पेनरोज और उनके फादर, दे वर फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। सो दे वर आल्सो टुक इंटरेस्ट इनटू हिज आर्ट एक्चुअली। सो ये सारी चीजें मतलब आर्ट खाली आर्ट प्रेजेंटेशन नहीं करता है, ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, but art is more than that. Art is science, art is geography, art is mathematics. In that way, art is something educating people in different way. Like next, yeah. So एक image है rotary printing press की, which was invented by Richard March in 1843. और जो इसमें इमेज की जाती है, वो सिलेंडर्स यूज किया जाता है। ये सिलेंडर्स के ऊपर इमेजेस क्रिएट की जाती है, और उस इमेज सिलेंडर में से
फिर प्रिंट ली जाती है। उसके आधार पे दूसरे भी कई प्रोसेसेस लेटर ऑन इन्वेंट हुए हैं, जैसे रोटोग्राफर, ग्रेवियर और फ्लेक्सोग्राफी एंड सो ऑन। नेक्स्ट। ओके, एक और इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुई 1796 में, दैट इज आल्सो इन जर्मनी, और द इट इज कॉल्ड एज लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे राजा रविवर्मा के प्रिंट्स के बारे में या लिथोग्राफी के बारे में। तो लिथोग्राफी जो है वो उसके इन्वेंटर थे एलोइस सेनेफेल्डर। He was not actually an artist, but he was an actor, German actor and playwright. So उन्होंने ये इन्वेंशन की। सो जो स्टोन यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें कैट ड्रॉ की हुई है, ये जो स्टोन है वो लाइमस्टोन है। और लाइमस्टोन कई जगह पे पाया जाता है, लेकिन ये जो लाइमस्टोन लिथोग्राफी में यूज की जाती है वो खाली और खाली बवेरिया, जो जर्मनी में है, बवेरिया में ही पाया जाता है। द क्वालिटी ऑफ स्टोन, इट इज ओनली फाउंड इन बवेरिया इन जर्मनी। सो ये स्टोन की जो खासियत है वो ये है कि, और ये जो माध्यम की जो इम्पोर्टेंस है वो भी ये है कि पानी और इंक ये दोनों मिक्स नहीं होता है। सो वाटर एंड oil could not get mixed. This is the scientific reason behind this invention actually. So ये बाजू में जो आप इमेज देख रहे हैं वो एक प्रेस है जो लिथोग्राफिक प्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये स्टोन प्रिंटिंग इसी प्रेस में की जाती है। सो जनरली इस जो इन्वेंशन की भी एक अच्छी कहानी है, छोटी सी स्टोरी है कि ही वॉज एक्चुअली एक्टर एंड प्ले राइट। तो वो कहीं पे बैठा था नदी किनारे के पास में, और यहाँ पे इस तरह की क्वारीज पाई जाती है और स्टोन्स हमेशा कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। तो उस नदी किनारे में ये स्टोन्स थे, और घर भी पास में होगा। उसकी मदर ने उसे कुछ लॉन्ड्री के लिए कुछ लिस्ट दी थी। So he does not have anything to write, so he might have something which is greasy in his hand. So उन्होंने वो उस स्टोन पे लिखा, और उसके ऊपर पानी आता है, बट वो निकलता नहीं। तो उसमें थोड़ा सा कुतूहल होता है कि भाई इसमें ऐसी क्या चीज है। एंड देन ही स्टार्टेड इन्वेंटिंग दिस, वर्किंग ऑन दिस स्टोन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने एग्जाम्पल्स थोड़ा किए, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स किया कि भाई क्या हो सकता है। एंड दैट्स हाउ ही हैज इन्वेंटेड दिस lithographic technique. So later on he has researched on it, and then finally he was succeeded to invent this printing technology, which was then the fastest technology actually. Okay, next. सो ये एक तुलूज लॉथरेक करके आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट। उनका ये दो पोस्टर्स है। ही वॉज नोन फॉर मेकिंग दिस थिएटर पोस्टर्स एंड ऑल। सो ये कलर्ड पोस्टर्स उन्होंने बनाए हैं, जो कि बहुत जापानीज जो युकियोई आर्टिस्ट थे उनके प्रिंट्स से उनके प्रेरणा स्रोत है ये। जो तरीका है उनका, फ्लैट कलर और लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, क्योंकि एक यूरोप में उस समय में एक ये हुआ, जो जापानीज प्रिंट से वो बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए, और वहाँ पे जो एक टर्म प्रचलित हुआ उसे जापानिज्म कहा जाता है। सो दिस इज कम्स अंडर दैट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट। ओके, ये जो इमेजेस है ये स्टोन के ऊपर कैसे इमेज तैयार की जाती है, उस पे रोल किया जाता है इंक से, इंक। और ये जो रोलर भी आप देख रहे हैं वो लेदर रोलर है। इट इज अ लेदर रोलर। फॉर लिथोग्राफी जनरली इट इज नॉट यूज द
rubber roller, but it is leather roller, or it is also called as nap roller. And here you can see an artist taking impression from the stone. So ये एक कुतूहल का ये भी है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये प्रोसेस में प्लेन सरफेस के ऊपर ही आपकी इमेज होती है, जो कि ब्लैक इंक से आपने ड्रॉ की है। लेकिन जब आप ब्लैक इंक रोल कर रहे हो रोलर से, तो वो वाइट एरियाज में टच नहीं होगा. It will only attract to the image which is drawn, which is black. So because the stone is always damp with water, so wherever water is there, it will not accept the ink, and it will only touch or attract to the image. This is how it is made. So this is called as lithography. Yeah. Some more artists like right hand side pe you can see Honore Domier. He was known for his caricaturistic drawings, and he has done a lot of this images into lithography. And left hand side pe you can see an Indian artist, Gaganendra Tagore, who is known for doing his lithography, who has also published an album called as Adbhut Log. Next, which is in lithography. Yeah. ओके. सो लिथोग्राफी की जो टेक्नोलॉजी थी, उसके आधार पर एक नई फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध की कराई गई, दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट प्रिंटिंग. एंड एज यू ऑल नो एंड वी ऑल यूज इट, लाइक टुडे, इन टुडेज टाइम हम लोग जो भी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स या लीफलेट्स, ये सारे जो छपते हैं, जो यूज करते हैं हम लोग, वो सारे ऑफसेट प्रिंटिंग से उपलब्ध किए जाते हैं. So this technology is best described as when a positive image on a printing plate is inked and transferred from the plate to a rubber blanket, and the blanket image becomes a mirror image of the plate image. So actually जो लिथोग्राफी में हमने देखा, डायरेक्ट जो इमेज पे हम इमेज ट्रांसफर करते थे पेपर के ऊपर, इंस्टेड इन दिस प्रोसेस जो स्टोन पे नहीं, बट इसमें एक्चुअली एक प्लेट यूज की जाती है, दैट इज एल्यूमिनियम प्लेट. इट इज कॉल्ड एज लिथो प्लेट. सो लिथो प्लेट के ऊपर इमेज की जाती है, एंड देन इट इज ट्रांसफर टू अ रबर ब्लैंकेट. सो रबर ब्लैंकेट पे उल्टी इमेज आएगी, जो इमेज ड्रॉ की है उससे उल्टी आएगी, एंड अगेन फ्रॉम दैट रबर रोलर इट विल बी rubber blanket, it will be transferred to the paper. So that is why it is called as offset printing, and which is very faster actually. Earlier it was also available as a manual press into use, but then later on it is very fastest medium for printing. And आप सब जानते हैं लेबल्स और ये सारे जो जो न्यूज़पेपर हम सुबह 4 बजे पढ़ते हैं या अर्ली अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कैसे प्रिंट होते होंगे. सो ये उसका टेक्नोलॉजी का असर है. थैंक यू. नेक्स्ट. या दिस इज अ प्रेस ऑफ ऑफसेट. और आज के जमाने में अभी तो इससे भी और फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है. लाइक इंस्टेड ऑफ पहले जो एल्यूमिनियम प्लेट यूज होती थी, उसके बदले पेपर प्लेट होती है, पॉलीमर प्लेट होती है प्रिंट के लिए यूज. और समटाइम्स नाउ टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि एक शहर से दूसरे शहर में इमेज ट्रांसफर करना भी इजी हो गया है. सो इट इज दैट अवेलेबिलिटी इज देयर. या नेक्स्ट. So high volume, high quality printing, and used for magazines, brochures, newspapers, packaging materials, marketing, business. So this is mostly used for commercial purpose and to do it faster printing. Yeah, next.
Another printing process called as gravier printing. So gravier is again, it is used the cylinder method. On a cylinder, there the image is created, जो भी प्रिंट करनी होती है, और उसके बाद उसको पेपर पे ट्रांसफर किया जाता है, जो एक एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ इंटेग्लो काइंड ऑफ टेक्निक, जो सरफेस के अंडर में इमेज की जाती है. नेक्स्ट. Yeah, this is a cylinder, and you can see in center there is some highlighting areas, which is the image created onto the cylinder. So जो बैंक नोट्स हम यूज करते हैं, जो करेंसी यूज करते हैं, जो या तो रुपी हो या डॉलर हो या पाउंड हो, जो भी, ये सारी जो प्रिंटिंग होती है वो सारे एक्चुअली ये सारे मेथड्स इसमें यूज होते हैं, जो कि इंटेग्लियो है या प्लेनोग्राफी है, इस तरह के मेथड्स उसमें यूज होते हैं, जो नॉर्मली पीपल कैन नॉट कॉपी इट, और दे कुड नॉट यू नो मेक इट एट होम और समथिंग लाइक दैट. बट जो इमेज आप देखते हो बैंक नोट्स में या डॉलर में या रुपी में, ये सारे जो लीनियर क्वालिटीज है आपने देखी होगी, वो सारी एनग्रेविंग मेथड से की जाती है, and it is printed in intaglio method. Next. या जो फोर्थ जो मेथड है प्रिंटिंग की, उसे सेरिग्राफी या स्क्रीन प्रिंटिंग कहा जाता है. So it is a basically a stencil method, and there you can see some images like a frame with a yellow screen, then some inks are there, और ये जो वुडन स्क्वीजी आपको दिख रही है, उसमें नीचे के पोर्शन में रबर की एक स्ट्रिप रहती है, that is used for squeezing the ink into the frame, into this cloth, this silk cloth frame. So नीचे फ्रेम के नीचे एक पेपर रखा जाता है, and the image is squeezed, so the print will be transferred. Next. Yeah, this is the kind of it works. So the printing paper is kept down to the frame. An image is squeezed through this ink and squeezing, and you can see the screen. It has tiny dots, so the ink will pass on from the dots mesh. तो एक प्रेशर दिया जाता है, उससे वो प्रिंट हो जाती है. तो स्क्रीन प्रिंटिंग भी एक ऐसा माध्यम हुआ जिसमें वो काफी पॉपुलर था, और स्टेशनरी जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, और कमर्शियल यूज के लिए काफी यूज किया गया. बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह इसमें प्रिंट होते थे. और डिजिटल प्रिंट या कंप्यूटर प्रिंट्स आप सभी जानते हैं ये कितने साल से आए हैं, क्योंकि जो लोग आई थिंक almost around 40-50 years age hai, they all know that before 20 years what was the printing technology and how it has to take over this digital era. So ये सारी methods उसमें यूज होती है. स्क्रीन प्रिंटिंग काफी पॉपुलर था amongst the commercial use. Okay, next. So ये एक बहुत फेमस अमेरिकन आर्टिस्ट है कॉल्ड एज एंडी वारहोल, or he is known to be as one of the most famous popular artists, or it is called as pop artist. So this is his own portraits. So he was known for to use popular images into his artwork, like corn or corn soup, or कोको कोला जो कौन ये है, और images like famous personalities, and he has created his own portrait
or the next one. Yeah, Marilyn Monroe, one of the famous actress. So he has created in many of his prints this image, singular or maybe in repetition, and so on. And also his use of the color are very vibrant and pop. So he belongs to this generation, and he was into contact with many young artists also, and this filmmakers, and he was actually a gay man, and that influence also could be seen in many of his works and all. Yeah, next. Yeah, in screen printing also, like in India बहुत सारे कलाकार ने इसमें काम किया है. So ये बड़ौदा के ही एक महान कलाकार हैं, ज्योति भट्ट सर. He was our teacher in Faculty of Fine Arts in painting department. He is also known for many of his screen print works. Next. Okay, now अभी तक हमने 4 जो मीडियम है थे उसके बारे में देखा. अभी I'll just like to focus on how printmaking came into India actually. So printmaking history in India start from the Goan city. It was the Portuguese colony over there in 1556. So these Portuguese missionaries they imported a press from Lisbon, and they started printing uh, almost the Christian scriptures to spread the Christianity into the India. And this is the old press. Here you can see the next. Yeah, and also this press came into Goa. That was exactly around 100 years after the invention of the printing press, which was started by Gutenberg. And if we go further beyond this press, we get some evidences like duplication of images, not onto the paper because it was not rich here in India that time, or they might have not known about it. But you can see that this kind of evidence is in Indus Valley civilization. As like earlier we saw it in the Babylonian image and Mesopotamian clay tablets and all. Similarly, at that time also this could be found out here. Also, there are evidences to carve images on copper plates or shells and other things like wood and bone and ivory and all. That also could be a kind of matrix which is created around that time. Next. Yeah, these are some of the specimens. This right hand side you can see, which is mostly like clay tablets or वो सिलेंडर प्रिंट्स. जो नीचे की इमेज है उसमें आपको एक राउंड छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है. So that could be rolled onto the slab of clay, and an impression could be taken. And ऊपर में जो इमेज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स होती थी, जो फेमस bull seal, that could be seen. Here another Harappan seal you can see, the positive as well as the negative of the impression. Next. या सो जो इंडिया में जो शुरू हुआ इसमें 1561 में ये जो अर्ली इमेज प्रिंट हुई गोवा के प्रेस में से, जो फर्स्ट इमेज है. और 1568 में एक बुक कवर पेज के तहत एक जो सेंटर में जो इमेज दिख रही है, जो
एक गोथिक आर्च की तरह से और पिलर्स के साथ जो इमेज है, और एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में भी प्रिंटिंग शुरू हुई. So that is an example of Doctrina Christian, and woodcut image printed in along with Tamil language in 1578. Later on, it was developed in nearby places like next. या सो इंटाग्लियो जो प्रिंटिंग थी यहाँ पे इंडिया में कब आई उसका हमें हमें अगर देखना है तो वो इंट्रोड्यूस इंडिया में जर्मन मिशनरीज ने किया है, और वो 1712 में Bartholomew Ziegenbalg, he was known to introduce in India. So he has published a book called the Evangelists and Acts of the Apostles. Again, ये तमिलनाडु में प्रिंट हुई, printed in Trankebar. During that time, it was a colony of Denmark. Next. Yeah, first अभी हमें देखे 1816. During that time, the Britishers also were there in India, and so this is the first Indian artist called as the printmaker, known as Ramchand Roy, who has made this image. So during that time, actually, Britishers they were writing their letters to their officials to London or the UK office about Indian people, that these people cannot do something their own. They can't. They can copy something, but they cannot think of a unique thing. सो जो हम कहते हैं वो करते हैं, बाकी वो अपना कुछ सोचते नहीं है. तो इसका ये पहला एग्जाम्पल कहा जाएगा, क्योंकि वो लोग कभी दे हैव नॉट अलाउड दिस इंडियन पीपल टू डू समथिंग देयर ओन, बिकॉज it was kind of secret also for them. Yeah, and this is the first impression by Ramchand Roy, which is printed in Balabodh Muktavali book, which is created, and also it is known the print called as Anand Mangal, Anuda Mangal, which is the Bengali pronunciation. It is called as Ananda Mangal. Next. Okay, next. ओके, थोड़ा जल्दी जाएंगे. अभी ये है विलियम डेनियल्स हु केम टू इंडिया and during the British time, and they published William Daniels and Thomas Daniel, चाचा भतीजा थे. उन्होंने ये कुछ 12 व्यूज ऑफ कलकत्ता पब्लिश किया. नेक्स्ट. या नेक्स्ट. ऑल्सो लिथोग्राफी का जो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया वो 1822 में by the French artist Charles D. Savignac, who is known to be one of the first who has printed a lithograph of portrait of Warren Hastings, and originally it was painted by George Shinery. So lithography कभी कभी क्या होती थी कि उसको पेंटिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट. This is a print in lithograph by Charles D. Oily. He was also an official at Dhaka office. So in British time, like so many officials, they were appointed here. They were not actually artists, but they have interest in art and they have good skill, and they were also making this kind of images. Sometimes they were making in engravings, their drawings and all, and etchings were done in Britain and all. Yeah, next. Yeah, so next, Battala prints. So Battala is a very famous prints done during the 19th century, and which was established in the Soha Bazaar
area of Kolkata, which is now known as a police station. And the artisans of that time, they have all together gathered there and started working here as trade. Next, mostly their images were, divine images like mythology, took images from mythology and social pictures, Puran, Ramayana, and all. Next, so this is an image. They also mostly their images are in black and white, and then they used to color it by watercolor or ink and all. And next, yeah, this is also in black and white. So mostly they were using black and white woodcuts only. Next, this is known as Battala prints. Gorkoli, it is ये जो बंगाली बाबू बीबीज का जो घरेलू चित्रण किया गया है इसमें. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, सो अब तक जो मटतला जो है वो 1930 से लेके 1830 से लेके 1870 80s तक 90s तक चला. और बिकॉज ऑफ इट्स चीप यूजिंग ऑफ पेपर and very cheap in market value, it got damaged soon, very fast. It does not long lasted. But in between, like in around in 1850s, these art schools were established by the Britishers. So the first school was started by Dr. Alexander Hunter in 1850 in Madras, followed by in Calcutta in 1854, and in Bombay in 1857, Jaipur in 1866, and Mayo School of Art in Lahore in 1875 were established. These are all four, five art colleges were established by the Britisher, which is the main purpose of them are the to run their offices as well as to produce the industrial kind of draftsmen and all. So it is also mostly known as the industrial art colleges. And in Baroda, the MSU Fine Arts was started in 1949, which is very much later. But before that, Shantiniketan, next, Shantiniketan, the has also started in 1990. Yeah, in between end of the century, 19th century, Raja Ravi Verma came into the scene, and he was very much popular, being a painter, European style painting, and his paintings were very famous as well as very in demand. But it was kind of very expensive, so everybody cannot uh, buy it. So he has a thought, he has a dream that my art should go onto every wall of the Indian houses. So he thought of establish this lithographic oleographic press, and which he has established in 1894 in Ghatkopar nearby Bombay, and then it was shifted to Lonavala. Next. Yeah, so his subject matters was just like his paintings, the Hindu gods and goddesses, Mahabharata, Ramayana, Purana, and all. And because of his ill health in the next early century, uh, in 1901, he was selling it to the technician, his technician, who came along with this technology to Mr. Shelger. So he has later employed many talented artists and created new designs also. Yeah, next. Yeah, so these are the called as oleographs. Actually, oleographs are next. Oleographs are a kind of lithographic printing also only, but the technology is different. Like their people are there, like the technicians mostly they do color separations,
and for each color they use different blocks, different stones, and they create image by dots, and then later on, after getting printed in all colors, they used to uh, make it a varnish coat over the surface. Next. Yeah, this is one of the another artist who worked in oleography, called as Vasudev Pandya. He was also from Gujarat, a place called as Lunawada, and he has also done quite a few very good lithographs, oleographs. Next. And another artist from Maharashtra called as M.V. Durandar. His oleographs are also so famous and very good works. Next. Yeah, in the next, the 20th century, this Kalabhavan established in 1919 by the Rabindranath Tagore at Shantiniketan, and this Nandalal Bose was the famous painter who has also worked in the Bichitra Club established by the trio of Tagore brothers at Jorashankho, and they took interest to make lithographs, etchings, and all. And Nandalal Bose became also the uh, you know teaching in the Shantiniketan. And other artist who has also worked in this printmaking are Ramana Chakravarti, Binod Bihari Mukherjee, Ramkinkar Bej, Manindra Bhushan Gupta, and many more. Next. So these are some of the woodcuts by Nandlal Bose, the Rhino, and Manindra Bhushan Gupta. Next. Sahaja Path is a text, a Bengali language learning book written by Rabindranath Tagore, and it was uh, uh, the images are created by Nandlal Bose, which is also still used to learn the Bengali language by the tiny tots in this even today also. Next. Yeah, in this is the Gandhiji image was created by Nandlal Bose during his involvement into the freedom of India. Next. One more artist, Chittaprasad, he was very good, known for his woodcut prints. His interest into, he was an activist kind of person, and in 1943, he has also covered the Bengal famine, which is an assignment given to him by the Communist Party. He was also part of it. Next. Yeah, one more printmaker of that time was Harindas. His woodcuts are so vibrant and very good. He did engravings, linocuts, etchings, but he was very much famous for his woodcuts, specifically color woodcuts. Next, this is also one of his etching. Harindas. Next, this is a woodcut of rural landscape. And then, being a sculptor, Ram Kinkar has also took interest into the etchings. So he has made so many etchings. Ramin Chakravarti also did etchings. Next. Then Somnath Kaur, born in Chittagong, and he was also known for mostly his etchings, linocuts, and lithograph, and especially for his blind prints that is known as white on white, and which is the series he created is called as Wood series, which is also uh, inspired from the this Bengal famine representation.
the social representation of yeah. Next, this is the Fun's print. Next, then there are artists called as Devyani Krishna and Kanwal Krishna. They were both involved into plate building activity, and they were using many image building creation, like using carborundum and paper strips, cloth, so many things like that, and taking impression of it. Next, then in Baroda, Jyoti Bhatt has took interest into printmaking. He went to USA and Spain and Italy, sorry, and learned printmaking techniques over there. And throughout, he did prints as well as in photography. Next, this was a woodcut, and this is an etching. It's called as the Lost Pandit. Next, this is a serigraphy by him. Next, so mostly his images are based on the local Saurashtra embroidery and folk images. No. Next, this is from Saurashtra embroidery. Next, then an artist from Aligarh, Zarina Asmi. She has took interest into printmaking, and she's known for his minimal expressive images of mostly displacement and border and this sort of image. Next, then calligraphy has been explored by artist Jayant Parikh from Baroda. This is also a kind of plate building activity, and then take impression out of it in intaglio and relief combined process. Next, then from Delhi, Anupam Sood is known for his feminist ideology and to represent those images into her work. Next, yeah, she has also used some of the uh, photographic images in her work. Next, and Lakshma God from Hyderabad, he was very famous for his bold representation and expressions and very strong linear quality in his works. Next, this is his later works did some color prints, which is nearby the viscosity method. Next, yeah, Krishna Reddy is very world-renowned printmaker, studied from Vishwabharati Shantiniketan, and later he went to uh, this Stanley William Hayter studio, Atelier 17 in France, and he coordinated with Stanley William Hayter along with this inventing this method of viscosity printing. Next, this is his print viscosity method. Next, viscosity is known for color printing, color intaglio printing method, which was not earlier there, but it was invented by Stanley William Hayter along with Krishna Reddy. Next, next, yeah. There, then what happened? के print making बहुत सारी cities में भी उपलब्ध हो गई, प्रेस वगैरह मिलने लगे, स्टूडियोज ओपन हुए, बड़ौदा में छाप स्टूडियो, प्रिंट मेकर्स गिल्ड एस्टेब्लिश्ड इन 1919 दिल्ली, एंड ललित कला ने बहुत सारे स्टूडियोज ओपन किए, भारत भवन भोपाल और कनौरी आर्ट सेंटर अहमदाबाद वगैरह में, जो कि अ, जो आर्ट स्टूडेंट्स पास होते थे कॉलेजेस में से, उनको यहाँ पे काम करने की उपलब्धि हासिल हुई. अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग पास्ड आउट at one stage to continue their works. Next, और आज के टाइम में जो है वो प्रैक्टिस काफी आगे बढ़ी है. लोग जो अभी
ऑल्टरनेटिव और हाइब्रिड प्रिंट मेकिंग के बारे में सोचते हैं. Also, digital method is there to co-op with the established these four methods. And in Europe and America, artists are now thinking about non-toxic materials, like which could not hazard us to some extent. Like otherwise, we use the chemicals like acids and benzene and resin, which are very much hazardous. So there is a think, and many artists, many art institutes, they promote this sort of non-toxic printmaking. Okay, thank you. This is the last slide. Yeah. Thank you for listening. थैंक यू सर. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. डॉक्टर नवल जी को मैं विनती करता हूँ कि आभार विधि बोले. Yes, so thank you so much, Dr. Sunil Darji ji. You have given us a very informative lecture about the development of printmaking. What is printmaking? The history from the very beginning, invention of paper, which was started in China. And there were so many, you have talked about gradually the printing, different styles of printing, including this relief wood in engraving tools printed earlier. Earliest printed book you have mentioned about Diamond Sutra, that was in 868 AD. You have also talked about the invention of intaglio printmaking, and you have given several examples about different methods of intaglio printmaking. We personally, I am from music field, so you have discussed about so many technical terms and different styles of printmaking. So if you could, it's my request from other researchers and the faculty that belong to music faculty, if you could share your PPT with us, that would be very helpful. Thank you so much. Thank you so much for sharing. Surely, I will provide it, and it will be given to you. Thank you. Thank you so much. Yes, it is very informative. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर नवल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन. आज का 11वां दिन रिफ्रेशर कोर्स का यहीं पर मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप आज के दिन भी जुड़े रहे. अभी हम कल 3 सेशन करेंगे. पहले 2 लंच के पहले होंगे और तीसरा सेशन लंच के बाद होगा, और उसके बाद हम वैलिडिक्टरी फंक्शन करेंगे रहेगा, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पे दोनों रहेगा. और हमारी इच्छा है कि आप कुछ अपने फीडबैक अगर कुछ देना चाहे तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को, मुझे या निर्जरी मैडम को या दिव्या मैडम को कल दोपहर तक अपना नाम दे दीजिए, ताकि कल वो टाइम टू टाइम खत्म हो पाए, क्योंकि हमें फिर 6:30 बजे हमारी एग्जाम भी करनी है. आप अगर ऑनलाइन फीडबैक अपना 1-2 मिनट 3 मिनट जितना आप रख सकते हैं, अगर किसी को देना हो तो, किसी को फोर्स नहीं है, बट इफ यू विल गिव तो वी विल गेट मोटिवेटेड. ऐसी कुछ आगे भी प्रोग्राम करने के लिए हमें भी उत्सुकता रहेगी, और कुछ भी सजेशंस हो तो वो भी आप रख सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे. तो आज कल कल दोपहर से रखते हैं. कल दोपहर 12 बजे तक आप ग्रुप में अपना नाम लिख सकते हैं, या हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं. तो
हम उस हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम का कार्यक्रम का शेड्यूल है वो उस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। और आज का जो फीडबैक फॉर्म है वो 6 बजे तक आपको मिल जाएगा। और 7वें दिन तक के सारे वीडियोस आज यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएंगे। 22 तारीख से लेके जो कल आज तक के जो वीडियो है वो कोशिश करेंगे कि कल हम अपलोड करें, ताकि आप थोड़ा जितना भी अरे वो नोट्स बनाने वो तो वो कर सके। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी, वरना हम मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आई डोंट थिंक सो। तो कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर फीडबैक के लिए नाम देने हो तो 12 बजे तक कल। थैंक यू। 10 मिनट थोड़ी थोड़ी बहुत है। 10 मिनट એટલે એટલું તો થાય સર कॉपी કॉपી कर ના કॉપી ના